Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is net present value. Net present value is equal to present value of cash flows and minus initial investment. So, net present value can be computed by discounting the each year cash flow by the discounting rate, and then we can write the equation cash flow of first up to n numbers minus initial investment. If the discount rate is 10% for both projects per annum, initial investment is 42,000. Then for project B, it is 45,000. And for 5 years, we have cash flows, operating cash flows for project A are 14,000 consecutively for each year. And for project B, cash flows are for 28,000, 12,000, and 10,000 for next 3 years consecutively. So we will use net present value technique. जरा इस चीज का जो हम जो है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं. जब हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमने पे बैक पीरियड की टेक्निक को जो है वो देखा है. उसके बाद हमने जो सेकंड टेक्निक जो हमने यूज की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट to know here, that it net present value consider all cash flows, and whereas जहां पे बैक का तल्लक है, पे बैक जो है वो उतने ही कैश फ्लोज को कंसिडर करता है जितने जो है वो जितने से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी हो जाती है. उसके बाद के आने वाले कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता, तो उससे हमारी जजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो इफेक्ट हो सकती है. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम सारे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं उसकी आज डिस्काउंटेड वैल्यू देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारे डिसीजंस जो है वो एट टाइम जीरो किए जाते हैं. इसलिए इस चीज को हम जो है वो कंपेयर करेंगे कि जो फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज मिल रहे हैं उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है. लिहाजा हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को कंपेयर करेंगे with the initial investment, and then we will finally decide. For this purpose, we used the cash flows, 14,000 divided by 1 plus I, 10% for first year, for second year, for third year, and after computation, we got the net present value 11,056 for project A. And in the same manner, we computed the net present value cash flow first divided by 1 plus I for first cash flow, then second, then third, then fourth, and then for minus initial investment. So all cash flows has been discounted one by one with this equation, and we got the value of net present value for project B, that is 10,911. Now the decision criteria, project A has higher net present value, so project A is accepted. Otherwise हमारे पास जो decision criteria हम यूज करते हैं वो हम कहते हैं जी कि कोई भी जो किसी भी एक प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है, एनपीवी शुड बी ग्रेटर देन 0. अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अदरवाइज वी शुड हमें तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें प्रोजेक्ट को क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है. प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड. अगर दोनों प्रोजेक्ट जो है वो उनकी हमारे पास जो है वो एनपीवी जो है वो लेस देन 0 है तो दैट विल प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड. अगर दोनों प्रोजेक्ट है उनकी एनपीवी हायर है तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो हायर है उसको हम जो है वो एक्सेप्ट करेंगे. अच्छा, अब हम इसी कंप्यूटेशन को मॉडल करते हैं एक्सेल में. हमारे पास डिस्काउंट रेट है जी 10%. हम यहाँ पे डिस्काउंट रेट पुट करते हैं. डिस्काउंट रेट इज 10% per annum. Initial investment is 42,000, and now we will we have cash flows. We will design this table.
For this purpose, we have 4 columns. First year's column, operating cash flows, present value, interest factor, and present value of cash flows. For project A, the cash flows are given for 5 years, that are 14,000. So we will compute present value interest factor. So we compute the present value of cash flows is equal to, we know that 1 divided by 1 plus interest rate, that is 10%. We will fix it. And the power is each relevant year, number of years, जैसे जैसे हम, so it's our present value interest factor for given interest rate for given number of years. हम इसे ट्रैक कर देंगे और करने के बाद, अच्छा, जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, ये है बेसिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दोनों की मल्टीप्लिकेशन. हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो रन करेंगे. इज इक्वल टू this value multiplied our present value interest factor. So these cash flows are, हम इनको भी यहाँ पे ट्रैक कर देंगे. अब हम इसका सम लेंगे क्योंकि हमें सम चाहिए, सम ऑफ present value of all cash flows. We will select this, go towards auto sum, and we got this. So now we can compute the present value and net present value for project A. That's equal to sum of present value of cash flows minus our initial investment. So our present value, net present value of project A is 11,700. अगर हमने यहाँ पे इसको कंप्यूट किया था तो ये थोड़ा सा हमारे पास जो डिफरेंस आया है, दैट इज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स. अब इसी तरह से हमने प्रोजेक्ट बी की कंप्यूटेशन को जो है वो परफॉर्म कर लेना है. हमारे पास प्रोजेक्ट ए की आ गई है और फिर प्रोजेक्ट बी की हम जो है वो कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे. Now dear students, we will compute the net present value for project B. Again, our interest rate is, discount rate is 10%. The initial investment is 45,000. That is to be taken for this project. And now again we will use here is equal to 1 divided by 1 plus interest rate 10%, and its power is years, and we will fix because 10% mean fix for all values. इसे हम fix कर देंगे डॉलर साइन के साथ और अपने फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे. Again we have values 0.909 to make it format the numbers up to 3 values. By multiplying this value with, now we will drag it to the last is equal to अब हम इसे सम कर देंगे. Yes. So the net present value is equal to sum of present value of cash flows minus initial investment. The net present value for project B is 10,924. Now the project A has higher
नेट प्रेजेंट वैल्यू देन प्रोजेक्ट बी। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल जो डिसीजन क्राइटेरिया है, दैट इज इफ NPV is greater than 0, we say accept the project. And if NPV is less than 0, we say reject the project. अब इस सिचुएशन में दोनों प्रोजेक्ट्स की पॉजिटिव आई है, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट की हायर एनपीवी है उसको हम जो है वो क्या करते हैं, उसको हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इट्स वेरी क्लियर, बोथ प्रोजेक्ट्स की हमने एनपीवी को कंप्यूट किया, हमने इसको एक्सेल में भी मॉडल किया। अगर हमने मैनुअल करना है तो हमने उस चीज को भी यहाँ पे जो है वो विजुअलाइज किया है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है जिससे हमने जो है वो प्रोजेक्ट को इवेलुएट किया है। थैंक यू सो मच।